In India, 75% of doctors have experienced violence. And this is much more than most other countries in the world. In fact, younger and less experienced doctors are particularly vulnerable. In Kerala, we had a young 23-year-old doctor being murdered by a patient who was brought in by the police for her to treat. ये देश में डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। डॉक्टर पर देश की जनता को श्रद्धा होती है। हमारे कोई भी मरीज जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और कई बार डॉक्टर की छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो भी मरीज और उसके रिश्तेदार बोल देते हैं कि उसका आयुष्य पूरा हुआ होगा, हम डॉक्टर को दोष ना दें। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. Sir, we all have to be very concerned about the rising incidence of violence in the workplace against doctors and healthcare professionals. In India, 75% of doctors have experienced violence, sir. And this is much more than most other countries in the world. In fact, younger and less experienced doctors are particularly vulnerable. In Kerala, we had a young 23-year-old doctor being murdered by a patient who was brought in by the police for her to treat. A recent survey by the Indian Medical Association showed that 82.7% of Indian doctors feel stressed out by the profession, 62.8% fear violence, and 46.3% say violence is the main cause of their stress. Now, I had raised this issue in a private member's bill. I got a very good reply from the health minister saying that we cannot have any legislation to protect doctors because if we do it for doctors, tomorrow chartered accountants will want special laws, others will want special laws. Sir, but doctors are working on life and death matters. They're working with patients, they're saving lives. Risking their own should not be part of their profession. Sir, I urge the government to reconsider this stand and to kindly introduce legislation that will actually protect doctors and other healthcare professionals in the workplace, and at the same time produce some financial or legal support to medical professionals who become victims of violence while performing their duties at the central level. This Dr. Vandana Das in Kerala was killed in a government taluk hospital. This kind of thing should not be allowed to happen, sir. The government has a responsibility, and I would urge the minister to change his policy on this matter. Thank you, Mr. Speaker. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शशि थरूर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, ये देश में डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। डॉक्टर पर देश की जनता को श्रद्धा होती है। हमारे कोई भी मरीज जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और कई बार डॉक्टर की छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो भी मरीज और उसके रिश्तेदार बोल देते हैं कि उसका आयुष्य पूरा हुआ होगा, हम डॉक्टर को दोष ना दें। ये हमारा देश की रीति नीति रही है। और लेकिन भी डॉक्टर का प्रोफेशन भी ही ऐसा है कि कई बार एलिगेशन हो जाता है, कई बार लोग इरिटेशन में उसके सामने एक्शन कर देते हैं, कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो दोषित भी ठहरा देते हैं। वैसी स्थिति में उसको प्रोटेक्शन मिलना बहुत वाजिब है, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जब कोविड चल रहा था तब पेंडेमिक एक्ट में भी हमने सुधारा करके ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके सामने एक्शन लिया जाएगा, प्रावधान किया था। उसके बाद लास्ट सेशन में जो आज तक कोई हिंसा करता है तो आईपीसी एक्ट के अनुसार उसके सामने कार्यवाही होती थी। और इस बार जो नए कानून माननीय गृह मंत्री जी ने पारित किया उसमें भी प्रावधान डॉक्टर के लिए विशेष किया गया है। उन्होंने अपने भाषण में भी उल्लेख कहा कि नेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा उसको भी रजूआत हुई थी, मेरे पास भी बार बार आते थे और ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के सामने कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति होती है और समय समय पर कानून में बदलाव होना आवश्यक होता है। आज के दिन में जो कानून में प्रावधान किया गया उससे डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.